लोकसभा में राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के लिए निमंत्रण पर तंज कसा, जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। अब इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सामने आया। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention. This is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important, because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I'm worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why, for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by. Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States, for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do, because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So that would be the first part of a president's address. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. राहुल गांधी के संसद में दिए इस बयान पर विदेश मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे महा वाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी गया था। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए नामित ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये थी राहुल गांधी के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।